Very good morning, 6th class. Today we will cover Digi for your history book. चैप्टर है आपका वन बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। हमने चैप्टर रीडिंग में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो बुक्स होती हैं, जो बरियल्स यानी कि जो कब्रें होती हैं, वो हमें पास्ट के बारे में क्या क्या बताती हैं। कौन कौन सी जो बुक्स हैं जो हमें बताती हैं कि सबसे पहले कौन सी बुक लिखी गई है, कौन सी जो है टेक्स्ट प्रिंट हुए। ठीक है, तो आज जो है हम इसी चैप्टर के डीजी को कंप्लीट करेंगे। Books are an important part of your life. You read so many books, like textbooks, comics, and storybooks. But have you ever wondered which is the first ever book to appear in Indian literature? Discuss this in your classroom. स्टूडेंट्स देखो, ये हमने चैप्टर रीडिंग करी थी तो हमने पढ़ा था कि कौन सी वो बुक थी जो सबसे पहले लिखी गई थी इंडियन लिटरेचर में। कौन सी बुक्स थी वो? वेदास के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वेद ही वो पहला लिटरेचर था जो जिसकी सबसे पहली बुक्स हमने पढ़ी है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वेद मिले थे। The answer is the Veds. Veds are a group of 4 books: Rigved, Samaved, Yajurved, and Atharvaved. Of these, the oldest book is the Rigved, which was composed around 3,500 years ago. The name Rigved is derived from the Sanskrit word Rig, which means to praise. The Rigved is a collection of 1,028 hymns of praise called Sukta. Most of the hymns are about Indra, the rain god, Agni, the fire god, and Soma, a special plant drink. Do you know that unlike other books, Rigved was not written down? Instead, it was memorized and passed on from one generation to another only by oral recitation. देखो स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहे हमें, जो हमारा ऋग्वेद है उसको जो है सबसे पहले जो है वो लिखा हुआ नहीं था, यानी कि रिटन फॉर्म में नहीं था हमारा ऋग्वेदा। बल्कि क्या होता था, जो ये ऋषि मुनि होते थे, जो सेजेस होते थे, ये इसको पहले खुद याद करते थे, मतलब वर्बली ही। ठीक है, और फिर इसको रिसाइट करते रहते थे बार बार, और अपने जो है जो इनके डिसाइपल्स होते थे, जो इनके शिष्य होते थे, उनको सिखाते थे। ठीक है, तो ओरल रेसिटेशन के थ्रू ही, यानी कि लिखा हुआ नहीं था बल्कि बोल के ही, उच्चारण करके ही ऋग्वेदा को जो है एक जनरेशन तक दूसरे जनरेशन को पास किया The जाता way था। you recite poetry in your poetry competition, it was written down hundreds of years after it was composed. In the Rigveda, some prayers were dedicated to cows and horses and chariots. Cows were considered as wealth. People stole cows from cattle sheds and fought battles for them. They rode grand horse chariots with spokes in those battles. People fought wars to possess land, which was used for grazing cattle and growing crops, like barley. People also fought battles to capture people. They treated their captives as slaves. Do you know the relationship between a master and a slave? Discuss this in your classroom. देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहे स्टूडेंट्स कि जो मास्टर यानी कि जो मालिक होता था और जो उसका स्लेव यानी कि जो उसका गुलाम होता था, इनमें कैसा रिलेशन होता था।
The composers of the Rig Veda described themselves as Aryas, meaning the noble ones. They were light-skinned people and lived in small groups or tribes. These groups or communities were called Jana. People in the Jana were described in terms of their work. Brave and skillful warriors were appointed as leaders, called Rajas. Each Jana had priests, Brahmins, who performed rituals and sacrifices. In the Rig Veda, there is description of people who didn't perform rituals and sacrifices and lived in forts. These people were called Dasas or Dasyus. Dasas looked different from Aryas and spoke a different language. Aryas treated Dasas as their enemies and fought battles against them. Aryas then conquered Dasas and treated them as their slaves. Do you know that Dasa is a Sanskrit word that means enemy? After the Aryas captured the Dasas, the word Dasa came to mean slave. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, आपको इनका आंसर बताना है कि कितने हाइम्स जो हैं वो ऋग्वेदा में है, यानी कि हाउ मेनी हाइम्स डज द ऋग्वेदा कंटेन। फर्स्ट आंसर 1028 हाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल इन द वैदिक टाइम्स वाज कंसीडर्ड एज वेल्थ, यानी कि जो हमारा वैदिक टाइम था, वैदिक पीरियड था, उस समय में कौन से जानवर को, कौन से एनिमल को जो है संपत्ति समझा जाता था, यानी कि वेल्थ समझा जाता था। कौन सा जानवर था वो? स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में, इट वाज काउ। ठीक है, काउ को लोग जो है अपनी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, वेल्थ मानते थे। व्हाट वाज द कम्युनिटी ऑफ आर्यास कॉल्ड, यानी कि आर्य लोगों की जो कम्युनिटी होती थी, उनका जो समाज होता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे जना। ठीक है, which people were considered as opponents of आर्यस, यानी कि आर्य के जो opponents होते थे, उनके जो विरुद्ध होते थे, उन लोगों को क्या कहते थे? उन लोगों को कहते थे दासास। ठीक है, आर्यस और उनके opponents को बोलते थे दासास। ठीक है, 'Megalithic graves and Brahmagiri'. Take a look at this visual. Do you know what is happening? This is how a burial takes place in present times. Can you think of other ways in which the dead are buried or cremated in different communities? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि और कौन कौन से वे हैं कि जब एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको जो है बरिड किया जाता है, क्रिमेटेड किया जाता है अलग अलग कम्युनिटीज में। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक कब्र दिखाई दे रही है ना। और कौन से तरीके होते हैं, जैसे हिंदूज में क्या करते हैं, अग्निदान करते हैं, यानी कि शव को जला देते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली बरिड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अलग अलग तरीक़ों से डेड बॉडीज को बरिड या क्रिमेटेड किया जा सकता है। Three 3,000 years ago, some people used to bury the dead in special graves.
To mark the sites of such graves, they used large stones. These graves are called megalithic graves, and they get their name from these two words. Mega meaning large, and lithos meaning stone. In India, archaeologists have found megalithic graves at many places. And today, you are going to visit a place where 300 graves were found. Brahmagiri. Brahmagiri is located in Karnataka. In 1947, Sir Mortimer Wheeler carried out major excavation work at this site. This is how Brahmagiri looks today. Take a look at these stones. They are arranged in a circular pattern. Below these stones is a grave. This type of grave is called a cist grave. Now let us travel 3,000 years in the past to see how people made this grave. First, they dug a pit in the ground. And placed a granite slab. Above that slab, they arranged 4 other granite slabs in interlocking pattern to avoid falling in of slabs. Sometimes people made a porthole in one of the slabs. The dead body and objects belonging to the dead were placed on the floor slab. The grave was covered with a huge stone called capstone. Finally, large stones were kept. जो ये पत्थर होता था स्टूडेंट जिससे इस कबर को कवर कर देते थे वो उसको क्या बोलते थे कैपस्टोन और फाइनली साइड में ये छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं प्लेस कर दिए surrounding the grave in a circular pattern. According to you, what could have been the purpose of the porthole? Discuss this in your classroom. स्टूडेंट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो पोर्टहोल्स होते थे इनका क्या पर्पस हो सकता था देखो As per a myth, portholes were made to allow the spirit of the dead to come out of and get inside the grave. But archaeologists say that these holes were made to insert other dead bodies in the same grave at later point of time. Archaeologists have found a variety of objects in megalithic graves, like red and black earthenware, conch shells, and beads of different materials like copper, gold, stone, and glass.
They also found iron tools like sickles, hooks, chisels, and iron weapons like swords, daggers, spearheads, and knives. The presence of iron objects in megalithic graves proves that 3,000 years ago people used iron. According to archaeologists, the objects buried in a grave probably indicate the social status of the person who was buried in that grave. For example, a grave containing objects made of gold and copper, exquisite pottery, and iron tools like swords were used to bury a rich person. स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे हैं कि जो रिच पर्सन होते थे उनके साथ क्या रखते थे, उनके जो स्वॉर्ड होती थी, ठीक है, उनके ऑर्नामेंट्स होते थे, ज्वेलरी होती थी, उनके जो गहने होते थे, आभूषण, ठीक है, बर्तन होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिच पर्सन के साथ भी जो है बरे की जाती थी. And a grave with a few earthen pots might have been made for a poor person. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, ऐसी कब्रें, ऐसे बरियल्स जहाँ पे सिर्फ कुछ ही जो है बर्तन मिलके हो, वो किसी पुअर पर्सन की कब्र हो सकती है, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु कैरिड आउट द मेजर एक्सकवेशन वर्क एट ब्रह्मगिरी. किसने किया था? सर मार्टिन ऑफ व्हीलर. इन विच पैटर्न आर द स्लैब्स ऑफ द सिक्स ग्रेव अरेंज. कैसे होती थी देखो, इंटरलॉक पैटर्न में होती थी ताकि वो कब्र के ऊपर गिरे ना, है ना. तो इस तरीके से होती थी इंटरलॉक. Why did the ancient people use large stone near graves? बड़े बड़े पत्थर जो है वो ग्रेव्स के पास क्यों यूज करते थे? To mark the burial sites. ये बताने के लिए कि ये एक क्या है, एक burial site है. What do the objects found inside the graves indicate? अब जो अभी हमने देखे थे कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिलते थे ग्रेव के अंदर, वो हमें क्या बताते हैं? What do the objects found inside the grave indicate? किस ओर इशारा करते हैं, क्या पता चलता है हमें इनसे? सोशल स्टेटस ऑफ द बरिड, यानी कि अगर वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स होंगे, स्वॉर्ड होगी, ठीक है, कुछ वेसल्स होंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये रिच पर्सन था. अगर कुछ सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन मिलते थे तो पता चलता था उसका जो सोशल स्टेटस है, जो डेड बॉडी है, यानी कि वो पर्सन जो रहा होगा वो एक पुअर पर्सन